हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसका उपयोग इंग्लिश में कब होता है सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है जान चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा और उसका इंग्लिश में यूज भी करना शुरू कर दिया होगा। यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर देखें। The present continuous tense or present progressive tense is used to describe an action that is happening now or describe an action or event in the future, which has already been planned or prepared. It means, इस tense का उपयोग किसी क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अभी हो रही है या भविष्य में किसी क्रिया या घटना का वर्णन करती है, जो पहले से ही नियोजित या तैयार की जा चुकी है। It's very simple to form present continuous tense, just add ing with the main verb. Example sentences: The birds are flying. I am not going. The structure to make present continuous tense is interrogative sentences या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें is, am या are plus subject plus verb प्लस ing का उपयोग करना होगा। Examples: Is he reading? Affirmative sentences या सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम subject plus is, am, are plus verb plus ing का उपयोग करते हैं। Example: He is reading. नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल: ही इज नॉट रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उदाहरण के साथ अभी हो रहे कार्यों के लिए। आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। He is not watching the movie. They are reading. She is not standing. Actions for future arrangements. I am leaving for Delhi tomorrow. Our grandparents are visiting to us at Diwali. I am not going to the meeting after work. We are going to the beach at the weekend. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उन आदतों के लिए कर सकते हैं जो नियमित नहीं हैं लेकिन ऐसा अक्सर होता है। He is forever losing his keys. She is always asking questions. Rohan is always smiling. Why is it always raining in Germany? We can use it for speaking about current trends. Nowadays people are using WhatsApp instead of SMS. Online shopping is growing in popularity.